Next question. Messrs. VST Limited is planning for a diversification project in automobile sector. Its current equity beta is 1.2, whereas automobile sector has 1.6. Gearing का मतलब है proportion of the debt financing in the capital structure. Gearing of automobile is 30% debt and 70% of the equity. Expected market return is 25%, RM दे रखा है. Risk free rate is 10%, RF दे रखा है. Income tax rate is 30% and also corporate debt is assumed to be risk free. Compute a suitable discounting rate under following situations. तुमको 3 situations दे रखा है. Project is financed by equity only. Second, 30% debt and 70% equity. 40% debt and 60% equity. So try to do answer for all the 3 questions on your own and put your answer in the chat box. Now friends, we are required to make the computation of the required rate of return for the different capital structure. Since income tax rate is given, so we have to do answer like this. Answer of the question number 1. Step number 1, उस पर लिखेंगे calculation of beta of unlevered equity. क्वेश्चन में हमको इस पर दे रखा है Messrs. VSTL is planning for the diversification in a project in automobile sector. Its current equity beta is XYZ. उससे हमको कोई मतलब नहीं है. ऑटोमोबाइल सेक्टर का क्या है वो इंपॉर्टेंट है. 1.6. गियरिंग ऑफ द ऑटोमोबाइल सेक्टर इज 0.30, यानी उनका डेट फाइनेंसिंग दे रखा है 0.3 और इक्विटी दे रखा है 0.70. ओके, सो टेकिंग दिस इंफॉर्मेशन इनटू अकाउंट वी आर रिक्वायर्ड टू डू आंसर. इट विल बी कैलकुलेटेड एज बीटा ऑफ द लीवर्ड इक्विटी डिवाइडेड बाय 1 plus debt into 1 minus C upon equity. What is beta of the levered equity? It is 1.60 divided by 1 plus debt financing कितना है कैपिटल स्ट्रक्चर में. डेट फाइनेंसिंग है कैपिटल स्ट्रक्चर में 0.30. इनकम टैक्स का रेट, इनकम टैक्स रेट इज अगेन 30%. और इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना है 0.70. दिस इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ आंसर. सो यहां पे क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, अगेन 1 minus 0.3 यानी 0.7, 0.7 into 0.3 यानी 0.21, अगेन डिवाइड बाय 0.7 दैट कम्स टू 0.3. उसमें एक ऐड किया जाएगा, सो 1.3. सो वी अंडरस्टैंड दैट इट इज 1.6 अपॉन 1.3. दैट इज 1.2308. ऐसा करके बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी फाइंड करेंगे. पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द प्रोजेक्ट इज फाइनेंस एंटायरली थ्रू इक्विटी, तो स्टेप नंबर 2 एप्लीकेबल नहीं है. डायरेक्टली स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 में वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ KD. It is rate of interest into 1 minus C. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको क्वेश्चन में दे रखा है, इट इज 10% और इनकम टैक्स का रेट है 30%. So 10% into 0.7 is 7%. That is the way the KD is calculated. Working note number 2, calculation of K. It is RF plus beta into RM minus RF. Risk-free rate of return is 10. Beta is 1.2308.
return on the market portfolio is 25%. RF is 10. So 1.2308 into 15, 18.46. That is the way K is calculated 28.46. फिर वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसमें क्या होगा, K itself is WACC। क्यों ऐसा सर? क्योंकि there is only equity financing, so it is 28.46%. This is what we understand. Second answer. The project is financed 30% debt and 70% equity. यानी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर का है ना वैसा ही हम लोग करेंगे, 30% डेट एंड 70% इक्विटी। तो ये जो बीटा ऑफ द इक्विटी है वही का वही बीटा ऑफ इक्विटी हमारे लिए होगा। सो वी अंडरस्टैंड दैट से हमको और कुछ वर्किंग करने का जरूरत नहीं है। तो स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत ही नहीं है हमको। डायरेक्टली स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ WACC। उसमें क्या करेंगे कि इट इज RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। टेन प्लस 1.6 इंटू RM माइनस RF। RM कितना है? 25 है। RF कितना? 10 है। 10 प्लस 1.6 इंटू 15, so 10 plus 1.6 into 15 is 24. So this is the way 34% is calculated. उसके बाद weighted average cost of capital, cost of equity into weight of equity plus cost of debt into weight of debt। cost of equity कितना? 34 into weight of equity कितना? weight of equity is 0.60, so 0.70। cost of debt ऊपर हमने ऑलरेडी करके रखा है 7, so 34 into 0.7 is 23.8 plus 2.1, that comes to 25.9. That is the way WACC is calculated. Third question, उसमें 40% debt and 60% equity। तो उस केस में हम लोग कुछ ऐसा करेंगे। स्टेप नंबर 1, बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी, वो तो वापस करने का जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी करके रखा है। इट इज 1.2308। स्टेप नंबर 2, बीटा ऑफ लीवर्ड इक्विटी, so the formula will be like this: 1 plus debt into 1 minus T upon equity। Now we understand that so the beta of levered equity
is equal to beta of unlevered equity into 1 plus debt into 1 minus t upon equity. So what is beta of unlevered equity? It is 1.2308 into 1 plus डेट फाइनेंसिंग का प्रोपोर्शन कितना है 0.40 है. इनकम टैक्स का रेट कितना है 30% डिवाइडेड बाय 0.6. So we will have the answer like this: 1.2308 into, it is 0.7 into 0.4, that is 0.28 divided by 0.6, so 0.46666667 ऐसा. So 1.2308 into 1.4667 ऐसा हम लोग समझते हैं. एंड 1.2308 into 1.4667 1.8052. Next, step number 3. Calculation of weighted average cost of capital. In that, working note number 1, calculation of cost of equity. It is RF plus beta into RM minus RF. The risk-free rate of return is 10%. Beta is 1.8052 into 25 minus 10. So it is 1.8052 into 15, 27.08. So it is 37.08%. Next, calculation of WACC. Cost of equity into weight of equity plus cost of debt into weight of debt. Cost of equity कितना 37.08. Weight of equity is 7 plus cost of debt कितना है? Cost of debt is 7 into 0.3. So 37.08 into 0.7. 25.96 plus 2.1, 28.06. That is the way the WACC is. Okay. Sorry. The weights are taken wrongly by me. This is 0.6 and this is 0.4. So 37.08 into 0.6, 22.25. 7 into 0.4 is 2.8. $25.05. So now we have like the three capital structures
वंस अगेन लॉजिकली हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे जैसे डेट फाइनेंसिंग इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन बढ़ता जाता है. सो द बीटा ऑफ द इक्विटी इंक्रीजेस and cost of equity also increases, of course. At the same time the company is getting advantage of the lower cost of the financing, इसलिए हमारा weighted average cost of capital कम होता जाता है. So 28.46 से 25.9, 25.9 से 25.05. That is the reason. So that is the way you can understand that से जितना debt financing ज़्यादा होगा उतना हमको interest tax saving का फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा.